Get started. So, did you guys try that form? Hello? Yes, Let's sir. start. Yes. Yeah, yes, sir. I Okay. have made the one from. Okay. Would you like to share your screen? Yeah, sure. Okay. And what about you, Rajesh? You got your laptop repaired? Oh, sir. Please No? accept my request, sir. Okay. Wait, let me allow you. हाँ सर, हेलो, आवाज आ रही सर? हेलो। Yes, sir. Adi. हाँ, स्क्रीन दिख रही है सर? हाँ हाँ. हाँ सर, ये फॉर्म बनाया सर मैंने, नेम ईमेल, उसमें पासवर्ड और एक कंटेंट डाले में एड्रेस का और एक बटन ऐड किया है। ये मेल फीमेल एक एक लाइन पे चाहिए. Why is it on different lines? हाँ, वो कर रहा था मैं, क्या मुझे जम नहीं रहा था सर, ये दोनों एट अ टाइम क्लिक हो रहे हैं। Inspect करो उसको. हाँ। Inspect. नहीं नहीं. हाँ. Do inspect. Now you see there's a selector. Besides element, there's one selector. At the one arrow you'll see on the left side. You see elements, console, sources, those things. दिख रहा है प्रसाद? हाँ, दिख रहा है, दिख रहा है। ऊपर टॉप पे. On the left hand side you'll see a arrow. Left hand side, left hand side. First click on console. Yeah, in this same line you'll see an arrow. You see arrow, left side, left side, left side. On the same line. Same line, left side. हाँ, ये। Left side, left side, left side. This is right. Yeah, this arrow. Click on it. Click. हाँ, क्लिक सर। Now go to, this is for targeting any element on the browser. हाँ, Go, now click on, go to mail. You have clicked on it, right? Go to your screen, mail, the one where you see mail written. Where is mail written? Oh, yeah, here. Now see, you can target it. Click on it. So this input is targeted. You see now in the elements, you'll see that section. अच्छा, ऐसे करते हैं इससे Huh. एलिमेंट। Okay. Now you see male and now you see female. So you have written two different names. So this should be only one name, gender. Okay. या जेंडर। Because a person, either male or female, right? या। Yeah. So when you write different names, that means you have different radio buttons. But when you write same name, Yeah, that same name. means, So that's why this. uh, yes. Okay. Got my point, everyone? Yes, 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 yes. Okay. Now for other things like input type, text, placeholder, name. So name is what an input element refers to. For email, what we'll write name for that input email. The password, password, address, address. Button last. Yeah, and we will refer to that particular text field by those names. Okay, so every text field will have different name, their unique name. Okay, got my point? But radio, but you just want one selection. So you just need to give one name to both of these. So, once you select male, female will be unselected. Once you select female, male will be unselected. Okay, so you're trying, you're getting this right. I Yes, hope sir. you have Yes. also made your form. Yes, sir. I have made my form, Okay, sir. and all this you guys Hello, did sir. it with CSS only, right? You're Yes, able to sir. do CSS.
Inline Yes, CSS in the same file in style tag, or you have created another CSS file? sir, external CSS I have applied. Okay, perfect. Yeah, we'll have to do that. And everything is referred by class or IDs, right? Yes, sir. Hello. Okay. Class I have created, sir. Can I show my form, sir? Yeah, sure. हेलो Prasad, सर you have एक any question? हाँ या सर व्हाट यू कॉल दिस बटन सर इस बटन क्या कहते हैं मतलब किस लिए Selector. हाँ Selector. रिलेटेड ओके Okay. Yeah, Shobha, you can share your screen. Okay, sir. I'm sharing my screen, sir. Is my screen visible, sir? Yes. Okay, sir. So I have created this form, sir. So there I have created a container here, Mm-hmm. div container. Okay. Then inside this container, I have written these names. Then there is a gender to select. Three options I have given. Yeah, Then there is select any other gender. Select. Yeah, select. Okay. So you have kept the name correctly. yes, sir. Then Okay, I have perfect. created this button, and I in the background I have inserted an image, sir. Background image. Yes, correct. Okay, yeah, this is good. For what? I mean, you have used image tag, right? IMG tag. Yes, sir. Yes, sir. Okay. I have taken help. Like in CSS, I have just created this background image. So this body in the body, I have created this background URL, Okay, okay. Yeah, this is and then also fine. I have made a folder here, image name as image. Then I have copy and pasted these images here. Then I have given the path here. Okay. Okay, yeah, this is good. Prasad, you can also try all these things. I mean, try to explore as much as you guys can do it from your own. यस श्योर सर Okay? Yeah, we can discuss. I mean, once you do something, we can discuss here like we are doing now. Okay? Okay. Let's start today's session then. I hope my screen is visible, right? यस सर योर स्क्रीन इज विजिबल Okay, perfect. So now, I mean, let's talk about documents now. So you have created everything, right? You have created a form. Like, let me take a ready-made form. Okay. And this one is like, yeah. So we have created this form. Now you can type in this form, right? Okay. Now this is again drop down. I hope you guys have tried drop down. So if you have not, just look at this. So this is a select type. What we call this a select type. Okay. And what is the job of this select type? It is to give us multiple. I mean, you select anything from a list, right? You know, you see country, there's a drop down. We call, I mean, for drop down, we use that select type. Okay. So any selection where we have to do those kind of thing, we'll use the select tag. Any drop downs, we will be using select tag of HTML. Okay. Now, so this is created, form is created. Now, you need this form's value, right? When you click on submit, there's an action like when you open a login form, you type in your email, you type in your password. Yeah, sorry. Yeah, when you see a login form, you type in your email, you type in your password, then you click on submit, right? Or you click on login. So all the information that you have filled on that form needs to be sent to the server, right? Which will validate your credentials. Then you'll get the message either successful login or failed login or email or password incorrect. Correct. या So for that, first you need value of this form, right? You need this values, first name value, last name value, country to pass it. I mean, first you need to get this value, then only you'll be able to pass it. Correct. For that, what we do, and how do we get this? So this is done in JavaScript. So we'll have a script tag here. Okay. Now, how do you get value of this? So there are, I mean, in JavaScript, there's document.
which will be used. So imagine this is your HTML structure. Okay. Now, what does your browser understand? Does it HTML. HTML? Okay. Does it understand JavaScript? No. No. Unless we embed it into HTML. And how do we embed it into HTML? Into the script tag. Correct. So once you write your JavaScript within script tag, JavaScript will, browser will come to know, okay, there's a script tag in which JavaScript has been written. Now it has to interpret it. Okay. Now what you are trying to do, you are trying to get value of an HTML field. Okay. Now you are trying to get value of an HTML field, which is this text box. Okay. Now suppose if I want value of this first name, whatever you type in here, I want this value. Okay. So how will you get this value? For that, you'll need JavaScript, right? So now you'll write some query into JavaScript which will give you this value. But how? JavaScript doesn't understand HTML. Okay. Remember this. Browser understands HTML. Okay. And browser understands JavaScript only when it is embedded into HTML, that is within script tag. But JavaScript doesn't understand HTML. What it understands is DOM. Now, what is DOM? DOM is document object model. Okay. I hope you guys are getting me. What is DOM? DOM is an document object model. So what is a document object model? So whatever HTML exists on your website, okay, on this browser, whatever HTML you see in here. So pertaining to that HTML, there'll be a object model created. Let me show you. Wait. Now suppose I have some code. Suppose this is HTML. Okay. Now HTML will have head. Again, it will have body. Now within this body, suppose we have a parent div, and in this parent div, we have two divs. Okay. Now again here bottom we have another div. Okay. Now in that div we have another. Again we have two other divs in that div, or say four other divs. Okay. And in some of this div there is some HTML tags like say input tags, input. Okay, something this kind of structure what we have. So this is HTML. This is understood by browser. Now we want JavaScript to know that there is some HTML structure. There is some HTML on the browser. So what does browser do? It creates a DOM. What is DOM? DOM is a tree-like structure. DOM is a tree-like structure pertaining to your HTML. So this is when you say tree-like structure. So this is HTML. Okay. Now HTML is again divided into two sections, right? This is your two section. Okay. Now here there is head. Here there is body. So head and body. Now head can what can head have? It can have something like this, right? It can have some meta tag or title. So this will again have title. Now coming to body. Body is divided into two two divs, right? Okay, I'll write it. But again, this two div is again divided. This one div has two sections. This is again divided into two sections. This is divided into four.
1, 2, 3, 4. Now this has 1 and 2. Okay. Okay. Now this last div, what it had some input tag. So again, our input tag. Okay. Now you see this is whole a three kind of structure. So our HTML is now small, right? But when you have a big HTML, you have a, I mean, when you see a browser, there's a big HTML, right? There's a lot of HTML code being written. So all that code gets converted into this kind of a tree-like structure. And this kind of a tree-like structure is known as DOM. Okay. So if you are asked in interview, what is DOM? So what you'll answer? You'll say DOM is a tree-like structure pertaining to the HTML. And why do we use DOM? I mean, DOM is used for JavaScript to understand HTML. So JavaScript doesn't understand HTML. It only understands DOM. Okay. Now, when you write code, come to know why we call it DOM. So DOM full form is document object model. So what is DOM? DOM is an tree-like structure pertaining to the HTML. Okay. JavaScript doesn't understand HTML, but it understands DOM, which is this tree-like structure. Okay. Now, how do we JavaScript refers to everything in this tree-like structure? It is either by class or ID or directly through the tag. Okay. Now, hope you got what is DOM, right? Okay. So in DOM, anyone who can tell me the full form? We just said it multiple times now. Document object model. Okay. Document object model. So now I want value of this input type. What does JavaScript understand? Document object model, DOM, right? Now, now try to understand. What does JavaScript understand? It understands only document object model. That is your document. It understands your document. So when it is referring to your HTML, it refers through document. Now, suppose I want first name. Document dot. Now there is, so you are referring this document. That means your complete HTML. From this complete HTML, say there is an ID given to this. The ID is, one second, huh? F 1 second. F name. F name. Just give me a second. Hello? Okay. Okay, sorry. Where were we? Yeah. So now we are referring this complete document, this complete HTML. Okay. And inside that HTML, we just want value of this particular ID. input tag. Okay. So, yeah. And that by that input tag, we are referring by ID. It is not looking to input tag, it is looking to ID. So for ID. that, you have to do get element by ID. ID. Okay. Now inside this, you'll have to mention the ID name. Name. Okay. What I'll do is I'll do a console.log First name. first name. Yeah, I'm just adding something to understand. Okay. Now I'll give it a default value. Why? Because currently we have not, we haven't learned events. So I'll just keep it a default value for now just to understand. Okay. Now if I go
and run this on browser. You see, by adding value, it came in here directly. And yeah, Now you see what is the value we got here? Null, right? null, empty. Yeah. Why? Because this is executed first. Let me put it down. Yep. Now you see, what do you got? You got the complete input tag, right? Yeah. Yeah. Why? Because what we wrote code, let's write it here. Document dot get element by ID. Inside that, I added the value f name. Get Now this animation is, होगा सर oh sorry, get element by आईडी. okay. So what this is doing, it is referring to this ID. So this is a part of this input tag. Okay. Now if you go back to your structure, so suppose you are referring, this has an ID of f name. This is whole document. Okay. In that document, you are referring to this ID. Okay. Okay. In that whole document, you are referring to this particular element by its ID. So what it returns you its ID. Okay. Sorry, it returns you that element. Now, if you want value of that element, you'll have to do dot value. Okay, got it? Yes, I got it. So only document dot get element by ID will return you that complete element. But if you want some particular thing from that element, like its value, so you'll have to do what do you want? You have to mention them what do you want. So you want value. So dot value. Okay, you want to try it now? I mean this is very important for you to understand JavaScript, React, everything. You want to try it now? Yes. Yes, sir. Okay, go ahead. Go ahead. But give it an initial value or else you won't get it. And one more thing before you try. So I added, I mean, our script was here, right? But then I put it here. Why? Because when it gets executed, what it does line by line. Okay. So first it executed the script, but when it executed this part of code, this was not in the browser, right? Because this was getting executed here. So it was not there on the browser. So it was not able to get this element. But once you put this script tag after this div, I mean after this input tag, so I mean what has happened? This has already been identified by the browser or executed by the browser. So now when you refer to that document, this is created. Okay, talking in terms of document. So where was your script? It was in here, right? Your script was lying here, correct? Correct? Yes, sir. Your script was here. So this will not, I mean this is not being understood by the browser, okay? The script tag was here and everything was in here. So this document was not created. I mean this input was not created when this script tag was initiated, okay? You see how down this is in the hierarchy. So this was not even executed. This was not present in the document when this got executed, which is why you were not able to get this input tag. But what we did, we added it after body. Okay, we added after body. So once this is executed, you'll get this. Okay, cool. Okay, give it a try. Write the code. Try. Now, one more thing. Try this with ID. Okay, and for this one, give it a class name. This will again have a class name, class of L name. Okay, say this. In your tag, you can add a class. And now I want you to get value of last name by its class. Go ahead, try it. Let me know. If you want to use internet to find these things, that's right. So that's all right. You can go ahead. Okay. Yeah, just try and let me know.
And Rajesh, try to get your laptop as soon as possible because now onwards we'll write a lot of code. Unless Okay. you practice, you won't be able to get this. Okay, sir. हाँ जी, हो गया सर। Yes. हाँ, डन सर। Okay, Shobha. सर क्लास वाला नहीं हुआ सर। Okay. So, Prasad, what about you? Class wala hua? यस सर, बोथ आर डन। Okay. Okay. Now, Shobha, remember last time what did I say about class and ID? So class can be duplicate, but ID needs to be unique. यूनिक। Okay. You या। remember?
Yeah. So when you refer it through class name, okay. Now, because class can be duplicates, dot get element by class name. This is by class name, okay. Yeah. Now inside this, you'll have to add the class name. Now, if you see there's an HTML array being written. Yes, I wrote. Let me refresh this. Now, you see there's an array written. Now, suppose I add this class and name to this one here as well. Just an example, okay? Now, if I do this, you see this array being written, and how what is the length of this array? Two elements, because there are two class names in this, right? There are two classes to two different elements. So which is why, since class name can be duplicate, it what it returns us is array. Now you have to decide which one you need to refer. If you want to refer to the first one or second one. If you're referring to the second one, the index would be one. If you're referring to the first one, index would be zero. Why? Because this is an array. Correct. You see, if you refer to the first one, you are getting this F name. Now, if you refer to the second one, you are getting this last name one. Okay. Now, similarly, if you want the value blank. Why? Because this is blank. If I write something and then I do value, you get this value. Okay. Okay. Got it, Shobha? Yes, sir. Yes, sir. Okay. Let's try a few more things with this document. Okay. Now, what I want you guys to try is you see this first name. You must have first name in your file as well, right? In your HTML. So what you need to do, once this is loaded, okay, here you need to change the color of this first name, only this first name label to red color. Okay, got it? We need to change this by to red color. Font of this to be red color. Just give it a try. How would you do this? Prasad, you got my point, right? What we need to do. Yes, sir, I got it. Okay, go ahead, do it. मतलब जावास्क्रिप्ट यूज करके उसका कलर चेंज करना है या सीएसएस से? जावास्क्रिप्ट यूज करके। ओके ओके, वो ऑन क्लिक होने से ना? नहीं, ऑन क्लिक नहीं, फिलहाल यू हैव टू राइट इट डायरेक्टली। डायरेक्टली? हियर डायरेक्टली। ओके ओके, नो
हाँ हेलो सर। यस सर। वो जो संजू नेम था उसका ही कलर चेंज किया था ना आपने? नहीं नहीं नहीं, उसके ऊपर लेबल है ना फर्स्ट नेम करके। तो मैंने एक कोड लिखा है, लेकिन मेरा जो क्या हो रहा है, वहाँ मैंने संजू की जगह प्रसाद मेरा नाम लिया था, तो उसका कलर चेंज हो रहा है। हाँ ठीक है दिखाओ। स्क्रीन शेयर करता हूँ। ये देखिए। एक मिनट हाँ। ओके, आपने किसको दिया है वो? क्या लिखा है कोड? एक्स नेम ना। हाँ, मैं इसको ट्राई ओके कर रहा था लेकिन हो नहीं रहा था। ठीक। सर आपको मेरा नेम को चेंज मेरा करना। हो गया। हाँ, एप के नेम की जगह मैं नेम, एक सेकंड ना, नेम लिखना पड़ेगा शायद। हाँ हाँ हाँ। एक सेकंड। आपको उस एलिमेंट को रेफर करना पड़ेगा। वो अलग एलिमेंट है। जो दिख रहा है लेबल लिखा है ना। इनपुट टैग है या वो लेबल है? कौन सा, ये ऊपर और लेबल है? लेबल है तो आपको लेबल को रेफर करना है ना। हाँ। तो वहां पे आपको उसको आईडी या क्लास देना पड़ेगा ना। अच्छा, हाँ आप समझ में आया। तब उस आप उस एलिमेंट को पकड़ पाओगे ना। वापस वो ट्री में जाओ। ट्री में ये लेबल अलग है, इनपुट अलग है। इधर मुझे आईडी लेना पड़ेगा क्या लेबल में एक? हाँ यस। देखो, लेना पड़ेगा, लिखना पड़ेगा, कोड लिखना पड़ेगा। हाँ ओके। रिमेम्बर, एवरीथिंग इन प्रोग्रामिंग इज लॉजिक, नथिंग इज मैजिक। तो आपको कोड लिखना पड़ेगा। अनलेस आप कोड नहीं लिखते हो, वहाँ पर रेफर कैसे करोगे? और आप आईडी सही जगह पे दे रहे हो क्या? आईडी किसको देते हैं हम लोग? एलिमेंट को ना। एलिमेंट के अंदर जाना चाहिए ना। लेबल के बाद लेबल में अंदर जाएगा ना। सर यहाँ पे सीएसएस का यूज करके हो रहा है सर, रेड कलर। सीएसएस तो शोभा यूज करना नहीं था यार, मतलब सीएसएस कर ही रहे हम लोग। बट हम लोग जावास्क्रिप्ट के थ्रू सीएसएस कर रहे हैं ना। ओके। ये देखो, इसने किया एफ नेम डॉट स्टाइल डॉट कलर। इसने पहले डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी डॉट स्टाइल डॉट कलर इक्वल्स टू रेड। ओके। ओके सर, वेरिएबल नेम उसने। हाँ, उसने वेरिएबल को लेके कर दिया है। ये सही है ना सर, लेबल आईडी? हाँ चलेगा। करो, उसको कोड लिखो। नहीं नहीं, डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय करना पड़ेगा ना। समझ क्यों नहीं रहे हो आप? आप पहले वो ट्री में जाओ, एक मिनट रुको। यहाँ पे रुको, शेयरिंग स्टॉप करो। समझो, कोड ऐसे ही मत लिखो कुछ भी। ये दिख रहा है, ये ट्री है। हाँ। इसके अंदर अगर लेबल होगा, सपोज यहाँ पे लेबल होता है इस इनपुट टैग का, तो लेबल अलग है ना। हाँ जो अलग है। लेबल अलग है तो लेबल का अलग आईडी है, तो उसके लिए पहले डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी और फिर उस लेबल का जो आईडी है वो लिखना पड़ेगा ना। हम्म। आप डायरेक्टली इसका जो आईडी है उसके साथ कैसे कर सकते हो? वो सिर्फ आप वेरिएबल चेंज कर रहे हो। आपको वेरिएबल थोड़ी चेंज करना है। आपको पहले उसको रेफर करना पड़ेगा, तब जाके आप उसको चेंज करोगे ना। इस लेबल को रेफर करो पहले। ठीक है, स्क्रीन शेयर करो। एक सेकंड हाँ। दिख रही है? नहीं, अब तक नहीं आया। राजेश, नेक्स्ट टाइम ट्राई टू गेट अ लैपटॉप, यू विल आल्सो हैव दिस काइंड ऑफ डाउट। ओके सर। हाँ दिख रहा है। अभी आपको वो कोड लिखना पड़ेगा ना। आप वेरिएबल नाम चेंज करके थोड़ी होगा। वेरिएबल क्या होता है? आपने जो ये डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी नेम किया, उसको आपने सिर्फ एक वेरिएबल में स्टोर किया, एक जगह पे स्टोर किया जिसके अपन रेफरेंस ले सकते हो आप हर जगह पे। ऐसे ही सेम आपको नेम लेबल के लिए भी करना होगा ना। अच्छा, मतलब यहाँ सेपरेट हम एक वेरिएबल क्रिएट करना पड़ेगा। हाँ, अलग अलग आईडी करना रेफर पड़ेगा। कर रहे हो तो अलग अलग रेफरेंस लेना पड़ेगा ना।
ओके ओके सेम ओके। रेफरेंस से कैसे होएगा? मैं बोला ना, जादू थोड़ी कर रहे हैं हम लोग। एक्चुअली सर मैंने इसके पहले जावा पे काम किया है, ये फर्स्ट टाइम इस पे कर रहा हूँ। हाँ हाँ, नहीं कोई बात नहीं। और उसको वेरिएबल नेम टू क्यों कर रहे हो? लेबल है तो लेबल करो ना। ओ नेम सॉरी। लेबल कर सकते हो ना, नेमिंग कन्वेंशन भी तो सीखना है। जावास्क्रिप्ट में सब अलग अलग ही है। हाँ तो जावा अलग है, जावास्क्रिप्ट अलग है ना, सिंटैक्स बदल रहे हैं। जावा बैकएंड के लिए, जावास्क्रिप्ट फ्रंट एंड में कर रहे हो आप। तो कंपनी ने मुझे रोल फ्रॉड किया है, इसलिए मैं ये सीख रहा हूँ, अलग ही है। हम्म। हाँ दैट इज फाइन। तो आपका हुआ? सर मैं इनका देख के कर रही हूँ सर। अब इधर डायरेक्टली भी मैं इस्तेमाल कर सकता हूँ स्टाइल डॉट कलर। अब लेबल में आपको रेफरेंस आ गया, अब लेबल के साथ आप जो करना है करो। लेबल में क्या आ गया? ये पूरा जो लेबल टैग है आपका लाइन नंबर 9 का, वो पूरा आ गया। अब हाँ उसमें आपको जो छेड़ना है वो आप उस वेरिएबल के साथ छेड़ सकते हो उसको। तो अच्छा। लेबल डॉट स्टाइल डॉट कलर करोगे तो किसको जाएगा? उस लेबल के ही कलर इसको जाएगा ना। हाँ करो, लेबल को स्टाइल अप्लाई हो जाएगी। लेबल डॉट स्टाइल डॉट कलर। हाँ, इक्वल टू रेड। अब लाइन नंबर ये जो 36 पे आपका सिंटेक्स एरर है ना, आपने वहां से एफ नेम हटा दिया है 36 पे से। नेम हटा दिया है, हाँ ये हटा दो, चलो हटा दो पूरा। आउट करता हूँ। अब चेक करो। हाँ हो गया। समझा? अब ऐसे आप इसको क्या क्या प्रॉपर्टी दे सकते हो? कुछ भी, सीएसएस की कोई भी प्रॉपर्टी दे सकते हो। हाँ और जी। सीएसएस आप उसको किसके थ्रू दे रहे हो? जावास्क्रिप्ट के थ्रू। जावास्क्रिप्ट के थ्रू। समझ रहा है? कभी कभी अगर वेबसाइट देखी होगी, उसमें दो मोड होते हैं, एक होता है डार्क मोड, एक होता है लाइट मोड। देखा है कभी कोई वेबसाइट ऐसा? हाँ जी फो- देखा है। फोन ही ले लो, फोन में डार्क मोड और लाइट मोड होता है ना। हाँ होता है सर, मतलब वो चांद जैसा ऊपर होता है, चांद। मतलब पूरा ब्लैक हो जाता है हाँ स्क्रीन। ब्लैक। अगर वेबसाइट पे भी देखोगे तो वेबसाइट में ऑप्शन होते हैं, डार्क मोड में जाओगे तो आपका पूरा बैकग्राउंड क्या हो जाएगा? ब्लैक कलर हो जाएगा। लाइट राइट। मोड में पूरा बैकग्राउंड कलर व्हाइट हो जाएगा। तो आपको एक बटन क्लिक करते हो तो वो चेंज होता है ना। यस यस। तो वो जब चेंज होता है वो किसके थ्रू होगा? जावास्क्रिप्ट के थ्रू। जावास्क्रिप्ट के थ्रू होगा ना। डायरेक्ट सीएसएस में थोड़ी लिखोगे। सीएसएस प्रॉपर्टी आप दे रहे हो, बट किसके थ्रू दे रहे हो? जावास्क्रिप्ट के थ्रू। तो आप क्या कर रहे हो? जैसे ही बटन क्लिक हो रहा है पूरे बॉडी को बैकग्राउंड कलर दे रहे हो। ये इवेंट्स हम लोग कल करने वाले हैं। ओके ओके। ठीक है, तो आपको समझेगा इवेंट जब करोगे तब। अब धीरे धीरे हम लोग इवेंट्स में बढ़ रहे हैं, तो धीरे धीरे हम लोग का अभी क्रिटिकल पार्ट सब चालू होते जा रहा है। कुछ कोई भी ट्राई करो, मिस मत करो। क्योंकि आप रिकॉर्डिंग तो देख सकते हो, बट ये सारी चीजें जो अभी साथ में इश्यूज आ रहे हैं वो नहीं देख पाओगे। जी सर। ओके, ठीक है। शोभा, आपको शेयर करना है या फिर हो गया? सर ठीक है, मैंने प्रेस। सर मैंने लेबल नहीं यूज किया था सर, मैंने स्पैन यूज किया था तो हाँ तो उसमें स्पैन को दे दो। स्पैन को मैंने, एक मिनट सर मैं अपना स्क्रीन शेयर कर रही हूँ सर हाँ, ये। आप स्पैन को आईडी दे सकती हो ना। ओके सर, जैसे क्या आपको मेरा स्क्रीन विजिबल है सर? हाँ हाँ सर मैंने स्पैन को यहाँ पे आईडी दिया, फुल नेम, एसक्यूएल नेम। हाँ उसके बाद मैंने स्क्रिप्ट के अंदर यहाँ पे वेरिएबल क्रिएट किया, स्पैन हाँ डॉक्यूमेंट डॉट करेक्ट। गेट एलिमेंट पर आईडी, उस आईडी नेम से। फिर स्पैन डॉट स्टाइल डॉट कलर, ये नहीं देना सर, स्पैन डॉट स्टाइल डॉट हाँ कलर रेड। बरोबर है। तो ये ओके सर, उसके बाद यहाँ नहीं पे चल रहा है? सर नहीं सर, नहीं हो रहा है ये। क्यों? यहाँ ये तो पे ऑलरेडी रेड कलर है आपका। हाँ रेड कलर है सर वो उसका। उसको इसलिए ब्लू करो। दिखेगा नहीं। अच्छा, अरे ये सर ये। आपको वो जो फुल नेम टेक्स्ट लिखा है ना, वो चेंज कर रहे हो आप। हाँ उसका नीचे कलर चेंज करना पड़ेगा, रेड की जगह ब्लू लिखो।
अच्छा, वो तो मैंने सीएसएस से किया था, वो नहीं, मैंने पर यहाँ आपको से। वही बोल रहा हूँ, सीएसएस से किया है बट जावास्क्रिप्ट से करना है। ओके ओके सर, अब अभी मैंने वहां पे आप ब्लू सीएसएस। करो। हाँ, हाँ देखो, आ गए अभी सर। सिर्फ उसी का रेड है, बाकी सब चेंज हो गया ना। यस सर, यस सर। अगर आपको इस इनपुट टैग के अंदर जो लिखा है उसको करना है, तो आपको इनपुट टैग का रेफरेंस लेना पड़ेगा, फिर उसको चेंज करना पड़ेगा। ओके सर, 1 मिनट सर, इनपुट, यस सर, वो करना है तो उसके लिए सर ये इसका इनपुट आईडी टाइप है। लगेगा, हाँ। अच्छा। इसका आईडी लेके इसको करना पड़ेगा, ओके सर, या अगर फिर मैं। क्लास लेके उसको रेफर करके करना पड़ेगा, ठीक है, ओके समझा। सर। या यस सर, यहाँ पे फर्स्ट नेम हाँ डॉट। वैसे ही ठीक है, वो कर लो यस आप, सर। ठीक है। और हाँ, अभी आज हम लोग डॉक्यूमेंट पे रुकेंगे, बट नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग इवेंट्स करने वाले हैं, तो ये सारी चीजें आप अच्छे से सीख लो, आप लोग प्रैक्टिस कर लो। इसके साथ अभी हम लोग आईडी और क्लास पे कर रहे हैं ना, एक हाँ। चीज नोट डाउन करो, एक होता है ये इवेंट्स, इवेंट सॉरी, क्वेरी सिलेक्टर। क्वेरी सिलेक्टर में डॉक्यूमेंट डॉट क्वेरी सिलेक्टर, इसमें क्या करते हैं हम लोग, डायरेक्टली जो भी क्वेरी है एक पर्टिकुलर टैग को रेफर कर सकते हो आप, ए टैग को। समझो आपके पेज में जितने भी ए टैग है उन सबका कलर चेंज करना है या उन सबको बैकग्राउंड देना है, तो आप डायरेक्टली वो टैग को रेफर कर सकते हो, और वो किसके थ्रू होता है, क्वेरी सिलेक्टर के थ्रू। ओके, Rajesh, you got my point. So likewise, that we have document.get element by ID, document.class get element by class name. We have another property which is document.query selector. And what it does, it I mean by using that you can select any of the property in your document that is in your HTML, and then you can change it. So this we are not doing it now, but you guys have to try this. Okay, try this, play with document. I mean, try to find things on internet, try to explore a lot of things on this document. If we'll have queries, we can discuss it in the next lecture, in the I mean at the start of the next lecture. Okay, yeah, but try this, because unless you try it, you won't get queries, you won't get to know what things are. Okay, 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 sir. Prasad, हाँ जी सर। क्या हेलो। बोला समझा ना, क्या क्या ट्राई करना है आपको। हाँ जी जी, आई गॉट इट। हाँ, okay, so try everything, try as much as you can, you'll get a lot of queries. Come with those queries in the next lecture, and then we can talk on those queries. Okay. ओके, श्योर श्योर। ओके सर, ओके। Okay. Yeah. Okay, then we'll stop here. We won't, I mean, we can't start events now. We're out of time. But यस। yes, next lecture will be on based on events. So ओके, try थैंक not to miss it. Okay. Yes. Bye. यू। बाय, थैंक यू। Okay. Bye. थैंक यू सर। Thank you, sir. Sir, हाँ जी। I don't know Hindi. Continue English. Yeah, sir. Actually, sir is also like teaching in English. Your ending number, your phone number ending with Yeah. your phone number ending number. Number means Phone number.